Hello students, in this video, today I am going to discuss figure of speech based on indirectness. In this way, the first figure of speech is innuendo. The word innuendo has come from the Latin language, which means an oblique or indirect hint. As a figure of speech, it is an indirect remark at something without mentioning the desired thought directly. The writer makes a derogatory remark about a person, place, thing, or idea in an indirect manner. तो जैसा कि इन्नुएंडो में बताया गया है कि किसी भी थॉट को हम अपने किसी थॉट को किसी पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया के लिए शेयर करते हैं तो उसको डायरेक्ट ना कह करके हम इनडायरेक्टली मैनर में कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड केम एंड माई बुक वॉज मिसिंग. Here it is indirectly stated that the friend of the speaker has stolen the book. मतलब जो स्पीकर है वो डायरेक्टली ना कह करके कि मेरे फ्रेंड ने मेरी बुक को चुरा लिया, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कह रहा है my friend came and my book was missing. Another example, he was born of rich but honest parents. The use of the conjunction but indirectly suggests that the rich men are not generally honest. Next is, I do not consult physicians, for I hope to die without them. This statement suggests that doctors or physicians, instead of treating patients, kill them. मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो डॉक्टर्स से डरते हैं, तो इस वजह से वो इस इनोइंडो टाइप के स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट इन दिस सीरीज इज irony. The word irony has come from Greek word which means a dissembler. Here dissembler means someone who hides their real feelings or intentions or hides the true facts. ठीक है. In literature, it is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. मतलब कि जो स्पीकर कहना चाहता है उसकी एक्चुअल मीनिंग से जो एक्चुअल मीनिंग उसकी होती है उससे उसका जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट होता है. बाय दिस फिगर द राइटर और स्पीकर प्रिटेंड्स टू एडमायर अ पर्सन or a thing while his real object is to put him or the thing on ridicule. Irony can be divided into the following way. Irony के कई सारे टाइप्स हैं, इसके थ्रू हम इसके एग्जांपल्स को भी समझते चलेंगे. Number one is called as verbal irony. In verbal irony, something is said and its opposite is meant. मतलब एक तरह से किसी पर व्यंग करना. फॉर एग्जाम्पल, what a good friend you are. Here the meaning is you are not a good friend. ठीक है, ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा. Next is dramatic irony. This involves a situation in which the author and the reader know what will happen to the protagonist, but the very protagonist does not know it. Dramatic irony ड्रामा में हमें मिलती है. प्रोटैगोनिस्ट मतलब मेन हीरो, मेन कैरेक्टर जो होता है किसी ड्रामा का, उसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ओथेलो द टाइटल कैरेक्टर मीन्स Othello is led to believe his wife cheated on him, but we know she did not. ओथेलो को ये पता होता है कि इसकी वाइफ इस पर चीट कर रही है, बट एज अ ऑडियंस हमें ये पता होता है कि वो नहीं करती है. नेक्स्ट इज आयरनी ऑफ सिचुएशन. दिस अकर्स व्हेन द रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन. मींस सिचुएशनल आयरनी होती है ये कि आप किसी सिचुएशन में बैठे हैं, वहां पर आपके साथ एक आयरनी क्रिएट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन विद हिज सेकंड वाइफ इज सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल नेक्स्ट टू हिज फर्स्ट वाइफ. Next is cosmic irony. This is the name attributed to works in which God or fate leads the protagonist to false hopes. फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि एक ऐसी आयरनी होती है जिसमें गॉड या फिर उसका भाग्य जो है प्रोटैगोनिस्ट को फॉल्स होप देता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अलादीन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिच मैन बाय द जेनी ओनली फॉर जैस्मिन टू रिजेक्ट हिम. ठीक है. Next is in Bruce Almighty. Bruce is given God's powers, but instead of making life better, he makes it worse. It's also a very ironical statement. I hope you will understand the irony. नेक्स्ट इज पेरिफ्रेसिस और सर्कमलोक्यूशन. इसको हम पेरिफ्रेसिस के नाम से भी जानते हैं. नॉर्मली सर्कमलोक्यूशन का यूज किया जाता है, बट कभी कभी एग्जाम में पेरिफ्रेसिस के नाम से भी ऑप्शंस लिखे होते हैं. This is a figure in which the writer or speaker describes an idea or thing in a roundabout manner.
जैसे कि कभी कभी हम कुछ बातों को बहुत ही घुमा फिरा कर कहते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सर्कमलोक्यूशन फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन रोब्ड सीनेटर्स ऑफ द माइटी वुड। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है जॉन कीट्स की हाइपरियन पोएम से, जिसमें वो ओक ट्री के बारे में बता रहे हैं। ओक ट्री को उन्होंने क्या कहा है, ग्रीन रोब्ड सीनेटर्स ऑफ द माइटी वुड। नेक्स्ट इज द ऑब्ड मेडन विद वाइट फायर लेडन, दिस इज कॉल्ड एज द मून। मून को शेली जो है अपनी पोएम क्लाउड में क्या बता रहे हैं, द ऑब्ड मेडन विद वाइट फायर लेडन। Next is, what will but felt the fleshy screen? What will but felt the fleshy screen? What is the fleshy screen? Fleshy screen, the body of the human. I am declined into the vale of years. Vale of years means old. He sleeps the sleep that knows no breaking, means dead. Do not be proud of the shroud of sentient clay. Means sentient clay means body. Okay, so this is the very important examples of and very famous examples of circumlocution. Next is sarcasm. Sarcasm is a direct attack on a person, thing or concept. जैसा कि irony में ironical statement होता है, मीन्स उसे हमें समझना पड़ता है, बट sarcasm क्या है, ये डायरेक्ट आपको टॉन्ट करता है, ठीक है। सो sarcasm is a direct attack on a person, thing or concept, exposing its weakness and follies. It is a figure of speech in which verbal attack is done to excite contempt and scorn. It is a satirical remark to expose the grim reality, thereby causing disrespect. Like G.B. Shaw की एक बहुत ही फेमस ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन, उसकी लाइन है, some soldiers I know are afraid to die. ठीक है, देखिए इसको डायरेक्टली कहा गया है ना कि ये आयरनिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सरकास्टिक स्टेटमेंट है, ठीक है। Here Shaw wants to expose the cowardice of some soldiers directly. Next is, wives in their husband's absence grow subtler and daughters sometimes run off with the butler. This is the line from Lord Byron's The Pirate Father's Return. And here Byron wants to expose the reality of women. Next is euphemism. The word has come from Greek word which means good voice. Euphemism का मतलब होता है मधुर आवाज, good voice. Etymologically, euphemism means speaking well about a person, place, or thing. In this figure of speech, something unpleasant and offensive is said in a pleasant and less offensive manner. जैसा कि हमने इनवेंडो में देखा था कि किसी भी बात को हम इनडायरेक्टली मैनर में कहते हैं, बट यहाँ पर किसी भी एक दुख भरे स्टेटमेंट को, अनप्लीजेंट स्टेटमेंट को प्लीजेंट वे में कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, he is now resting eternally, means he is dead now, ठीक। he could not satisfy his examiner, means he failed in the examination. You are telling me a fairy tale. मोस्टली हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि हमें कहानियां ना सुनाओ। You are telling me a fairy tale means you are lying to me. Next is Litotes. किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का या किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको मैंने अपने पहले का वीडियो जिसमें मैंने फुट एंड मीटर का वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने प्रोनाउंसिएशन पर काफी फोकस किया हुआ है। तो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ Litotes. It is a peculiar form of understatement in which a negative statement is given to mean something positive. To convey a strong affirmative sense, a negative statement is used. Thus, when we say he is no fool, we mean to say that he is wise. कभी कभी हम कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन यूज करने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस यूज लाने के लिए हम कभी कभी नेगेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे he is a citizen of no mean city, या no mean city का क्या मतलब है, he is from a great city. Next, days not dark are ahead of you, means bright days are ahead of you. Next, I shall not be sorry for this, means I shall be glad for this. Not a few men came to see Nehru. यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है कि कम लोग नेहरू को देखने नहीं आए थे, बल्कि means many men, बल्कि ज्यादा लोग आए थे। His not unworthy, not inglorious son, means worthy and glorious son. लाइटिटीज का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नॉट, नो इसका यूज मिले और एग्जाम ऑप्शंस में लाइटिटीज हो, तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे उस पर टिक कर देना है। ओके,
Next is meiosis or understatement. In this figure of speech, something is represented as much less in value than the thing really is. In other words, meiosis is a figure of speech which minimizes the importance of something थ्रू अंडरस्टेटमेंट. मतलब किसी भी बात को हम इतना गिरा देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि नहीं, इस बात में तो बिल्कुल कोई दम ही नहीं है. मतलब लाइक जैसे आपको कहना है ही इज नॉट टू थिन, मतलब वो बहुत ही दुबला पतला नहीं है. व्हाई डिस्क्राइब एन ओबीस पर्सन, मतलब किसी मोटे आदमी को आपको बताना है कि वो बहुत ही, आप ये कह रहे हैं कि अरे वो तो बहुत दुबला है. ठीक है, कभी बहुत हम मोस्टली इस फिगर ऑफ स्पीच का भी हम यूज करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन अंडरस्टेटमेंट्स का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं. It rained a bit more than usual while describing an area being flooded after heavy rainfall. It was okay is an understatement if someone who got the highest score in a test said this when asked about his result. मतलब कोई 98% अगर गेन किया है तो उसको वो सेटिस्फाई नहीं है अपने 98% से, उसको और 2% चाहिए थे, मतलब उसको 100% चाहिए थे, देन ही गॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, तो वो कह रहा है कि नहीं 98% वॉज ओके, तो दिस इज अंडर स्टेटमेंट. ठीक है, जबकि उसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. इट इज अ बिट कोल्ड टुडे व्हेन द टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग. ठीक है, ओके. Now that's all about today's session. I hope you all will understand this. Thank you, everyone.